हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग गुड। तो जैसा कि आप मेरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप गूगल क्रोम फ्रॉम रनिंग इन द बैकग्राउंड। आई मीन हाउ टू स्टॉप एंड व्हाई शुड वी स्टॉप गूगल क्रोम रनिंग इन द background. The reason we should stop Google Chrome running in the background is when it's closed and it still use your memory and it affects your PC performance. So we should definitely stop Google Chrome running in the background. And I will tell you how to do this. It's very easy. ये बहुत आसान है. Okay, it's probably 1 or 2 minutes video that I'm making for you guys, so that you can turn off this your Google Chrome browser running in the background. So let's start, guys. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम पर जाएं, ब्राउज़र पर जाएं. ओके, after going to your browser, just click on the right side at the top. You can see these three dots. You need to click on that. ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप जाएं सेटिंग्स पर. ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद एक ये ऑप्शन, ये थोड़ी एक फाइल ओपन हो जाएगी, एक टैब ओपन हो जाएगी. इस पे आपने क्या करना है, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे आपने आना है सिस्टम में. ओके, सिस्टम में आने के बाद ये आप देखें कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज़ क्लोज्ड. ओके, सो यू सी इट इज़ ऑन. ये ऑन है, इसीलिए ये गूगल क्रोम आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है एंड इट्स अफेक्टिंग योर पीसी परफॉर्मेंस. सो वी नीड टू क्लोज दैट. ओके, वी नीड टू turn off this option. So yeah, right now, guys, it will not use your memory, and your PC will be running way smoother than before. I hope you understand this video and you can do it on your own PC. And that's it, guys. Thank you so much, and please like my video and subscribe my channel. That's it, guys. Thank you. Bye. See you in my next video.